In my previous avatar, I've been a creator with 100 million plus views. I've built multiple businesses that do close to like 1,000 crores of creator earnings and transactions on the platform and work with 7,000 plus creators. I've spent millions of dollars building product and also expanding the business internationally as well. And this is exactly what I learned, which is going to blow your mind. The 3 weeks were filled with, I think, a bunch of lows. अब क्या है ज़्यादा सच दिखा दिए हम लोग ये vlog में. A lot of highs. First leg of the tour, Dallas with Summit. Super success. Let's go. So much of travel. So much of nature here and there. The party getting loud. If I have to share about the US trip, I think it was a trip of, the term is meta morphosis. कहाँ जा रहे हैं हम? हम लोग जा रहे हैं अभी टेक्सास. टेक्सास का कौन सा शहर में जा रहे हैं ये बताओ. डैलस. यो भैया भी देख रहे हैं हमारे. क्या है हमारा स्केड्यूल? फर्स्टली देयर इज नथिंग प्रेप फॉर विद समिट, बट उसके बाद तो इज इवेंट, बैक टू बैक इवेंट्स, मीटिंग्स. आई डोंट नो व्हाट्स रिटन देयर, बट इट विल बी फन. ये अभी हम दिखाएंगे कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए. Alright, we'll buy this and then we will go to the flight. आखिर हम पहुंच ही गए. Oh, Texas after 20 years, ना bro. इमिग्रेशन वाला हम लोग को देख के बोलता है, you guys seem like YouTubers. बट आगे जितना सवाल पूछा है वो हम कैमरा में. Thanks for all the recommendations. Man, y'all have a great stay. Thank you. Definitely check out the fair though. I think you like it. Definitely. It is in downtown, right? Yes, it's in downtown. ओके तो हम यूएस पहुंच गए हैं एंड डे 1 है डैलस में. डैलस हम आए हैं क्योंकि डैलस में इवेंट है विद समिट, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर कन्वेंशन है. प्राइमरीली 1000, 1500, 2000 क्रिएटर्स आते हैं. दिस इज प्राइमरी फॉर यूट्यूबर्स एंड दिस टाइम टैग मैंगो हैज स्पॉन्सर्ड विद समिट. एंड एज पार्ट ऑफ आवर स्पॉन्सरशिप डील हमें मिला है 2 वर्कशॉप्स दैट वी विल बी डूइंग फॉर 60 minutes ईच. एंड द लर्निंग from both those workshops and the experience of both those workshops was vastly different, which you will see by the end of this video. Alright, as you can see कि हम document कर रहे हैं अपना पूरा US trip को, and initial plan ये था कि हम videographers hire करने वाले थे US से. पर US के videographers इतने expensive है कि हमारा pocket खाली हो जाता कि 15-20 लाख रुपए लग जाता सिर्फ वीडियोग्राफर हायर करने के लिए. एंड बिकॉज हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं और हम जुगाड़ के लिए फेमस है, ये जुगाड़ हम किए टू सॉल्व फॉर आवर वीडियो कंटेंट. So we're on our way to take Oakley HSTN meta classes और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम जाएंगे बोटेनिकल गार्डन. हमारा उम्र हो गया है दादाजी वाला. हम नए शहर में आके देखते हैं कि नेचर में हम कहाँ जा सकते हैं. सो द बोटेनिकल गार्डन लुक्स रियली गुड. आ गए हम लोग भयानक सा मॉल में. ये देखिए आप मॉल. या आप अपना जो एक्सेंट है उसको चेंज करो. लोग बोलेंगे कि क्या हो रहा है. ये फाउंडर आदमी है कि क्या है? बेटा तुमसे ना हो पाएगा. जय हो जय हो. Let's see. Great. Yeah, started recording. Interesting. But every one of our lenses are made of this. Oh Hit this damn. as hard as you can. Fire in the hole. Come on, yeah. Hit it as hard as you can. As hard as you can. Just boom. Oh damn, it didn't. Hit it hard. Hit it really hard. Slap it. Sneeze. Bam. Damn, bro. Runs just the meta pair, prescription pair, same material necessary. So if you're wearing these and In terms, something happens, for adventure, it's the perfect one. yeah, we make eye protection that's
has the technology there, but we make eye protection. And you have the black one with amethyst in store. Yeah, bring it. You have to put that? You want to do it? Yeah. Let's do it. All right. Let's go. Right, Let's do it. let's go. Let's go. You got both the bills? Yeah, both the bills. Okay, cool. All right. Thanks, man. Thanks. Cheers. Just All right, you got it. आ गया बाहर जाते ही हम लोग खोल देंगे फिर से खुलता है तेरे चश्मे Let's go. ये हमारा चश्मा इसी को थंबनेल रखेंगे Hold up. pretty good अगर हीरो आ गया बैगन मेटा ग्लासेस लेने के बाद हम जहाँ जा रहे थे वहाँ एक ऐसा सरप्राइज हमें मिला कि हम एकदम से चौंक गए। अभी हम से थोड़ा गलती हो गया हमें लगा बोटैनिकल गार्डन्स खुला है 8 बजे तक गार्डन नहीं खोल के रखेगा तो क्या चीज़ खोल के रखेगा 8 बजे तक। तो क्या है कि 5 बजे ही बंद हो गया है। लेक वाइट रॉक पार्क जैसा है। करेक्ट पर हमें बहुत क्रेजी व्यू मिल रहा है इधर लेक व्यू व्हाट्स इज इट क्या बात है। अरे वाह I'll put in Abhinav's social media links down below. All the girls who want to reach out can reach out. The next day of us taking the Meta Glasses, we were in Dallas और हम वहाँ से गए थे Cedar Hill State Drive। वहाँ पे एक पार्क है Cedar Hill Park करके। Because Vid Summit के 1-2 दिन पहले था, we still had 2-3 days relatively free। तो बाबू लोग दोनों निकले हैं संडे डैलस में। We are going to Cedar Hill State Reserve, just kind of go absorb in nature before the hectic schedule comes into action from tomorrow, in fact tonight onwards, क्योंकि इंडिया में आज मंडे हो जाएगा। So alright, let's go have fun. Cheers. Sometimes I go there, people beg me for buying food and stuff. Oh really? Take care brother. Yeah. Thank you so much. We left our sandwich. Indeed. सैंडविच छोड़ दिया तुम इतना बढ़िया हमारा। Sorry. सैंडविच को छोड़िए, इस ट्रेल के लिए हम इतना अंडर प्रिपेयर्ड थे, यू वोंट बिलीव व्हाट वी हैड टू गो थ्रू। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग 2 नौजवान पहुंच गए हैं सड़क पर क्योंकि ट्रेल है आगे बोली आधा माइल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेल तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद घूम के आएंगे, गोला ट्रेल पे जाएंगे। घूम के क्या वही रास्ता लेना होगा वापस। और फिर क्या हुआ? फिर हमें दिखा एक बोर्ड। ये कोयोटी बॉबकैट ये सब तो ठीक है, गूस दिख गया तो क्या करेंगे? भागेंगे। अपनी जीत हो उनकी हार हाँ तालाला ट्रेल है तालाला, जहाँ पे एक ही जन गया है और हम लोग जो पैदल चल रहे हैं वंस अगेन फुट शॉट, क्योंकि मेरा डायरेक्टर बोला है फुट शॉट देने के लिए। ताला ट्रेल, लेट्स गो। सीडर हिल में हम गए एक बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट लाइक अ विजडमस, आई डोंट नो इफ दैट इज अ वर्ड, इंट्रोस्पेक्टिव ट्रेल पे जो बहुत हार्टफुल्ट था। और एक चीज़ मेरे को याद आ रहा था जो मेरे एक मेंटोर ने मुझे कहा था, विच वॉज अगेन सुप्रीमली इंस्पायरिंग। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी सिंसियर। एक मेरा फ्रेंड बोला था मेरे को कि सिंसियर हो ना, सीरियस नहीं। नेचर में आके तो मज़ा ही मज़ा है। इट्स लाइक एन इट्स ऑल योर सेंसेस इट्स आर ऑल हाइटेंड व्हेन you're in nature. There is no better feeling than this. So yeah, don't be serious, be sincere. I hope we're able to see what we are going after. And we have arrived. 6th of October was the only day हमें जो मिल रहा था जहाँ हम कुछ अपने आप को फ्लो होने दे रहे थे। It was just very, very magical. It was a lot of fun. And Abhinav
somber look, important for sunset shot. जो बीच बीच में थक जा रहा था 23 साल का होके, वो मेरे से बहुत कुछ सीख रहा था विद इन द सेम. यू सी, आई एम वेरी हम्बल दैट वे. All right, what day is it? Day 1 to Wit Summit. Day 1 of Wit Summit, day 4 in the US. Let's go. 2 boys in the States expanding the business in the US. ऐसे करेगा तो कोई पैसा नहीं देगा. So first we'll meet a friend of mine who's building some cool things. He was working at Google for close to 8 years. He was heading creator partnerships there. Then we might go for a lunch with some speakers at Wit Summit, and then we might just go for the Wit Summit registration, and then there's a party today at 7 p.m. So that's overall. We just network with folks all together and see how the day goes. What do you guys think about that? Am I looking too hot? I am. Cheers. डे 1 था बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग, बहुत लोगों से हम मिले, एंड आफ्टर द होल नेटवर्किंग इवेंट अभिनव को आया एक बहुत इंसेन इनसाइट, ऑलमोस्ट लाइक अ डाउनलोड बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द इंडियन एंड द यूएस creator economies. What I realized that when it comes to creator economy here in particular, I think India is way behind. Like what? Way behind in terms of these community events not being that mature. I mean panel discussion. आप कैमरा को Sorry. रखना आता नहीं. अरे हम नहीं है vlogger. हाँ, so yeah, I mean that maturity is something that's not yet there. Probably हम लोग build करेंगे वो. The valuation of creators and then investing, that's wild. Companies like Spotter, companies like Copyright Capital, these This guys. also kind of opens up an opportunity that people want to be a creator because for them it's a venture from day one. Right? That's how they are looking at it. But in India, I don't think that दूर तक भी ये चीज़ है. Like vanity is something that I think people look when it comes to thinking of creating content. Like largely, I can't generalize it, of course. Sure. But that's like the big difference here. No, I think today was the warm-up day because we just had bunch of interactions. From tomorrow there's a bunch of like keynotes, conversations, panels, all of that, which we're not going to attend because we're going to focus on networking, because that's what we've come for. More structured meetings with a few folks that's lined up, more strategic in nature. So karte hain, maza aayega. US expansion is on full-fledged. All right, signing off day 1 Wit Summit, day 4 US. See you guys tomorrow. Day 2 था one of the most important days of our US trip क्योंकि था the first workshop that we'd sponsored Wit Summit for. She focused on these 2,000, 3,000 customers that she can provide an incredible amount of value. And take her through the value stack of the ladder. Now she's making 1.2 million a year, which is insane even in US standards. For India, it's just wild. In the morning, I was prepping for the workshop really hard, and Abhinav was trying to eat an apple really hard. आज हम honestly बहुत late निकल रहे हैं. जो काम हमें पहले कर लेना चाहिए था PPT का presentation वो अभी हम 2 बज गया है जो हम इवेंट जा रहे हैं. But nevertheless, I think we are prepared for the PPT. Are we? Yeah, we are 100%. 100% we are ready. 5:15 is our presentation. Today we have a workshop, tomorrow we have a workshop, and day 2 is beginning with a bang. And that is our QR code. Where does it redirect you? To a landing page where we have wrote something thoughtful, and then we have sold ourselves cutely. Sure. Redirecting That's them what we to a got. WhatsApp number. होता है. All right, let's go. All right. Wacky Marketing 101. The first international workshop. भारत के बाहर भारत को represent करते हुए the boys and the team from Tag Mango. अच्छा, I have a question. हाँ बताओ. What if अगर 2 लोग फंसे? 2 हुए या सिर्फ तुम होगा? पिच तो हम पूरा ही करेंगे. कर्मान्य कार्यवाद. Anyway, वो वीडियो से ले लेना. Amazing, awesome guys. Oh wow, I can hear me. Oh, all right. All right, so Day 1 Wit Summit हमारा वर्कशॉप हमारा 5:30-6 बजे के आसपास था, एंड फर्स्ट वर्कशॉप में 60 RSVPs थे. Our
title was Owning versus Renting, the Future of Monetization. कुछ समझ में आया? हमें भी नहीं समझ में आया और जनता को भी नहीं समझ में आया, इसलिए नहीं समझ आया और टोटल में 10-11 लोग ही आए हमारे वर्कशॉप में। बट हम लोग इसको अलग टेक अवे से ले रहे हैं। हाँ और क्या, स्टोरी बिल्डर है ना। स्टोरी बिल्डर We started। इंडिया में भी हमारा तो ऐसे ही था ना। हाँ। एक एक करके ही हम किए थे, अब वापस से हम ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं। From a room filled with just 5 people to now filled with 5,000 people. अब That's हर, how we are. हर बार क्या, अब क्या है, ज़्यादा सच दिखा दिए हम लोग ये व्लॉग में। Honestly, it was very disappointing. We're expecting a lot more people to turn up because we'd spent so much of capital to sponsor the first workshop at Vid Summit, and हमारा turnout हमारे expectation से बहुत ही ज़्यादा कम था. But you know, we realized that even though we had a great presentation, we still couldn't get people in the room. What we needed was a change in strategy. And this is what happened in day 2. By the way, we have just got last minute 12-13 RSVPs. Last minute है तो मेरे को लग रहा है attendee rate 12-13 और ज़्यादा RSVPs आ गया last minute. Yeah, so I'm assuming that जनता दिख रहा है, जनता आ जाएगा. क्या बात है, लोग आ रहे हैं finally. All right guys, see you after the workshop. We're excited for this one. Let's see how it goes. All right, when you are ready, you can turn this on, place it in your pocket. Sure. What's the energy level at? I can't hear you guys. What's the energy level at? I like that even more. India, we're seeing a very interesting spread of almost memberships that are created in a very unique fashion. We had a shift in strategy overall. कल का workshop का हमारा messaging was very poor. Philosophical था बहुत. बहुत philosophical था. Owning monetization, the future of monetization. No one wanted to know that. Today we were like 7,000 creators make $100 million using our platform and this framework. Join us, you can too. Very salesy. And we got 30-35 people, very relevant conversations. Amazing. It was amazing. I think the learning here is that you got to be very specific Yeah. as per your ICP. So just be specific, don't spread across. Like the more specific you be, you attract the right folks. How come we missed that in the first one? The turnout was a lot higher. Not everything will always go your way. What you plan, what you put out there, and on the basis of feedback. Our first feedback was 10-11 log aaye. On the basis of feedback, it was 10-11 people, and this is the outcome we are getting. What can we change? What can we pivot? How can we do something better in order to get a better outcome? So you have to consistently keep pivoting in the entrepreneurial journey to find the right outcome and to get to the right output. And that is all the entrepreneurship journey is all about. So the first leg of the tour, Dallas Vid Summit, super success. Let's go.